हेलो प्यारे बच्चों, लेट अस रीड अ न्यू क्वेश्चन. टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि दो वायर हैं. लेट अस टेक दिस वायर इज ऑफ स्टील, ठीक है, एंड अनदर वायर इज ऑफ कॉपर. ये दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर है, मीन्स लेंथ दोनों की ही सेम है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी क्या है, सेम है. करेक्ट. अब इन दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है. तो यहाँ पर भी एफ इस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, सेकेंड वायर पे भी सेम फोर्स अप्लाई किया जाता है. सो द क्वेश्चन इज सेज if the elongation is 2 centimeter. Okay, if the elongation is 2 centimeter, then how much is the elongation in steel and copper wire respectively? Okay, तो अगर elongation 2 centimeter है दोनों का मिला के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं given del L in steel plus del L in copper is equals to 2 centimeter. Okay, so now what is given to us? हमें given है Young modulus for steel is given 20 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square, and Young modulus for copper is 12 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. Okay, so the key concept that we will use over here is, key concept will definitely be Young modulus, that is equals to force per unit area multiplied by length into change in length. Okay, now we will use this formula for steel wire. So YS will be force per unit area into length by del L, elongation in steel. Okay, second part for the copper wire के लिए हो जाएगा force per unit area into length by del L, elongation in copper wire. Okay, this is suppose equation 1 and equation 2. Let us divide. Okay, so that will gives us ys by yc, okay, is equals to del L for copper, elongation in copper, by elongation in steel. बाकी जितने भी वेरिएबल है फोर्स, एरिया और लेंथ, तीनों दोनों ही वायर्स में सेम है, सो दैट विल कैंसिल आउट. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू. सो इट विल गिव अस 20 into 10 to the power 11 divided by 12 into 10 to the power 11 is equals to del L of C and del L of steel. Okay, this will cancel out. Here it will be 5 by 3. So now we can write 5 by 3 time of del L of steel is equals to del L of copper. But over here we can use this equation. So we can write del L of elongation is steel plus 5 by 3 of elongation of steel. del L C की वैल्यू प्लेस कर दी हमने, is equals to 2 centimeter. That will gives us 8 by 3 of del L of steel is equals to 2 centimeter. Okay, further if we will solve this, so this will gives us 6 by 8 centimeter, that is 3 by 4, or we can simply say that कि ये 0.5 सेंटीमीटर लेंथ है किसकी, elongation in elongation of steel जो हमें मिला वो कितना है 0.75 centimeter. Now if we want to find out del L of copper, so it will be simply है ना 2 minus 3 by 4. This will be 5 by 4 or 1.25 centimeter. So del L, elongation in copper will be 1.25 centimeter and elongation in steel will be 0.75 centimeter. So which option is correct?
elongation in steel and copper. Okay, so steel का 0.5 centimeter and copper का है 1.2 centimeter. Option 2 is correct. I hope this is clear to you. Thank you.